Hello everyone and welcome to our second video. पहली बार thanks a lot for watching the first video and first video में we had a couple of questions, so we'll also discuss it at the end of the video. चलो, so in today's video we are going to discuss about the important new words as well as we'll also talk about some of the keywords in focus. So let's look at the first question. Replace the underlined word with an alternative. The monster had a hideous face. अब hideous का मतलब क्या होता है वो हमको इस वाले वीडियो में पता चलेगा. Let us look at the options. Complete, absolute, ugly, cheeky. इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का one of the better ways is elimination method. Elimination method भी हमको करना पड़ेगा with some with the use of some common sense. तो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं. आज इसको सब्स्टिट्यूट करें. द मॉन्स्टर हैड अ कंप्लीट फेस, एब्सोल्यूट फेस, अगली फेस, चिकी फेस, या फिर वी learn and read so much that we can at least have or make a calculated guess. मॉन्स्टर का तो कभी चिकी फेस होगा नहीं. चिकी इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ब्यूटिफुल या फिर क्यूट. इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. ठीक है. नाउ सेकेंड इज कंप्लीट. मॉन्स्टर का कंप्लीट फेस होना इन इटसेल्फ ये स्टेटमेंट में ज्यादा फिट नहीं बैठ रहा है, तो ऑफकोर्स दिस इज नॉट ऑल्सो पॉसिबल. एब्सोल्यूट फेस तो यहाँ पे कोई भी तरीके से नहीं होगा क्योंकि उसका मीनिंग ही इस पे नहीं आ रहा है. एब्सोल्यूट बाय इटसेल्फ मीन्स विच इज परफेक्ट और विच इज समथिंग दैट इज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्लीशन. ठीक है. Now or which is precise. ठीक है. So of course this is also not being not appropriate. So after the elimination method we come to the point कि ugly ही इसका आंसर होगा. So hideous का मीनिंग क्या होता है? Something which is ugly to look. Now it can be either a face, it can be the room, it can be any object that is present along with the subject. ठीक है. नाउ इसमें अदर वर्ड्स पे फोकस करते हैं. कंप्लीट. कंप्लीट के साथ और एक बहुत सिमिलर साउंडिंग वर्ड है. वी कॉल इट कंपीट. दैट वर्ड इज कंपीट. अब कंपीट का मतलब क्या होता है? टू कंपीट अगेंस्ट समबडी. मतलब किसी के अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं, नॉट इन द वे ऑफ फाइटिंग बट कोई कंपटीशन में हम उसके साथ वी आर गोइंग अगेंस्ट दैट पर्सन टू ईदर विन अ पोजिशन और विन अ स्पॉट. उसे कंपीट कहते हैं. एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट से और एक वर्ड निकल के आता है एब्सोल्यूशन या एब्सॉल्व. ठीक है. एब्सॉल्व क्या होता है? एब्सॉल्व इट मीन्स कि हम किसी को फॉरगिव कर रहे हैं या एक ऑफिशियल पार्डन जिसे कहते हैं. पार्डन. आई होप विजिबल होगा. तो इसे हम लोग कहते हैं एब्सॉल्व. ये एब्सोल्यूट से आता है. दिस इज द रूट वर्ड एब्सोल्यूट. ये एब्सॉल्व से और एक वर्ड आता है, दैट इज मैं यहीं पे नोट कर रहा हूं. एब्सॉल्व से और एक वर्ड आता है, वो है एब्सोल्यूशन. एब्सोल्यूशन मीन्स आई एम सीकिंग फॉर एब्सोल्यूशन, आई एम सीकिंग फॉर फॉरगिवनेस, आई एम सीकिंग फॉर पार्डन. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज स्कोर्स आर लेस ड्यू टू हिज एलिजिबल हैंडराइटिंग. हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि what is the right word that is going to replace eligible to make complete sense of the statement. Let us look at the options. पहला option is absolute, second is illegible, third is diluted. Again we will try the elimination method. पहले substitute करेंगे then eliminate करेंगे. His scores are less due to his absolute handwriting. जैसे मैंने बोला absolute is a very positive word. ठीक है. Now if the scores are less, अगर स्कोर्स लेस है, व्हाट इट मीन्स इट्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट बाय इटसेल्फ. तो किसी का अगर स्कोर कम होता है तो उसके परफेक्ट हैंडराइटिंग के वजह से तो स्कोर कम नहीं होता, या फिर उसके प्रिसाइज हैंडराइटिंग के वजह से तो स्कोर कम नहीं होता. सो दिस इज नॉट पॉसिबल एंड इट इज नॉट मेकिंग सेंस एज वेल. लेट अस मूव इनटू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज डाइल्यूटेड. डाइल्यूटेड इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू थिन समथिंग. आपने ये पढ़ा होगा कि आप जो क्वांट का प्रॉब्लम्स करते हैं, सो कंसेंट्रेशन ऑफ मिल्क इज टू वाटर रहता है, राइट.
So concentration of milk is to water में what is the main focus here? To how much milk, how much water should be added to the solution to dilute the milk, to dilute the solution. ठीक है? So that is where it becomes very important कि we understand that dilution is done to reduce the concentration of a solution. वो dilution होता है. The word dilution is also used in another way. मान लीजिए there is a problem that is present or there is a conflict that is present. उस conflict को reduce करना, उस conflict को mitigate करना. This is another new word for all of you. उस conflict को mitigate करना. That is also known as dilution of the conflict. ठीक है? That is also known as dilution of the conflict. So if we put this word here, due to his diluted handwriting, does it make sense? It does not make sense, right? So this is also not possible. The last option that we have is illegible. Illegible means something that you cannot read properly. Illegible is something that is unclear. ठीक है? And it is mostly used for signs यानी board symbols, or what do you call it? It is mostly used for signs. It is mostly used for handwriting. ठीक है? It is mostly used for symbols. ठीक है? So this is where this option will be the correct one, that it is an illegible handwriting. That is why the scores are less. Now let us move to the next question. Is it visible? Let me fold my page. Yeah, is it visible? I think it is visible. ठीक है. The next question is select the right synonym to the underlined word. So what is the underlined word here? Let us look into the statement first. His beneficence was evident in his regular donation. A beneficence is, I have told you before, the word which begins with mal, it has a negative connotation. The word which begins with b and ben, it has a positive connotation. ठीक है? Remember this always. Maleficent is a negative word, beneficent is a positive word. तो यहाँ पे हमको क्या करना है? सिनोनिम निकालना है. सिनोनिम किसका निकालना है? बेनिफिशिएंट का. अभी हम देखते हैं ऑप्शंस क्या है. एब्सोल्यूशन, मैग्नानिमिटी, मैलेवोलेंस, मैग्निफिशेंस. तो एब्सोल्यूशन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया. तो हिज एब्सोल्यूशन वाज एविडेंट, कहीं से भी नहीं लग रहा है ये वाला, so this is not possible. His malevolence is a negative word, beneficence is a positive word. Again, it is not possible that this is the answer in this case. His magnificence is something which is derived from the word magnificent. ठीक है? Which is derived from the word magnificent. Now magnificent in itself is used to explain a thing or an object. ठीक है? It is used to explain a thing or an object. So magnificent is when an object is very beautiful to look at, or when something is very beautiful to look at, or when a creature, or when suppose a situation is very beautiful or adoring, then we use the word magnificent. It is again a positive word. Okay? So if we are looking forward to this statement, his beneficence was evident in his regular donations, तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं? Magnanimity is the right option. Why? Magnanimity is derived from another word. Rather, it is the synonym of generosity. कि कौन कितना generous है. ठीक है? The generosity, this is the word that is the root word for magnanimity. ठीक है? Now let us move to the next question. Select the synonym for submerge. अब submerge का मतलब क्या होता है? इससे हमको एक किसका याद आता है? इसका याद आता है. क्या था ये मूवी? टाइटैनिक. टाइटैनिक में क्या सबमर्ज हुआ था? क्या सिंक हुआ था? शिप सिंक हुआ था. ठीक है? शिप क्या है? ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. नॉन लिविंग थिंग है. तो एक नॉन लिविंग थिंग क्या हो सकता है? सबमर्ज हो सकता है. एक नॉन लिविंग थिंग सिंक हो सकता है.
तो द सोल्यूशन टू दिस इज सिंक. ठीक है, द सोल्यूशन टू दिस इज सिंक. नाउ इफ यू लुक इनटू द अदर वर्ड्स, ड्राउन इज applicable for living things, and that happens when the living thing is already dead or unalive after being inside the water. ठीक है, that is drowning. Next word is burst. Burst is suddenly it's a sudden rupture of a balloon, for example, when it is filled with a lot of air. That is called bursted or burst. Now how you can remember, there is another word that comes out of burst. अगर इसमें मैं out add कर दूं, out plus burst, which is outburst. इसका क्या मतलब होगा, किसी को जब बहुत गुस्सा आएगा तो वो क्या फट जाएगा गुस्से से. हम लोग बोलते हैं ना गुस्से से फट गया है वो, तो इट इज outburst is anger. ठीक है, it's an anger or it's a reaction which is a very violent reaction to a particular situation. That's an outburst. But the outburst is also used in another way. यहाँ पे करते हैं, चलिए. Is it visible? Yes, it is. तो outburst का और एक भी होता है. जब कोविड हुआ था तब there was a sudden outbreak or sudden increase in the number of cases. In such cases also, when there is a sudden spike के केस में भी हम outburst बोलते हैं. Like for example, temperature हो गया, फिर यहाँ पे numbers हो गए हैं. It is basically used to denote quantifiable things, जिसको हम measure कर सकते हैं. This is why it is called outburst. Okay. Now let us look into the next one, which is shatter. Shatter is generally used with glasses mostly. Glass, hope. किसी के hopes shattered हो गए. Suppose you have a very good relationship and you thought that इसका एक अच्छा future होगा, but the hopes got shattered due to XYZ reasons. So that is when we use the word shatter. Okay. Now let us move to the next question, which is selection of the antonym for accelerate. Accelerate सभी को पता होगा, गाड़ी में होता है, हमारे लाइफ में होता है, सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि वी नीड टू एक्सेलरेट टू आवर गोल्स. तो एक्सेलरेशन इज इंक्रीज ऑफ द स्पीड और द वेलोसिटी, रादर इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी इन अ वेल डिफाइंड टाइम. ठीक है. नाउ व्हाट कुड बी द एंटोनिम फॉर एक्सेलरेट? स्वर्व, एक्सपेल, डिस्पेल, रिटार्ड. The right answer is retard. Okay. A much more specific answer is, if we look into it as acceleration, it's retardation. Now retard in itself has two different meanings. एक तो वही है, the opposite of accelerate, जो हमने अभी डिस्कस किया. Second is somebody who is unsound mentally. Somebody who is mentally unsound is called retarded. हम लोग यूज करते हैं retarded. He is a retarded person, right? Now coming to the other three words. Swerve is to move in a curved manner. एक straight path में नहीं जाके कोई इंसान अगर ऐसा जाता है, then we call it swerving. Expel and dispel. Dispel is to eliminate something. Dispel is to eliminate something. And expel is to eliminate someone. ठीक है. We expelled Ravi from the class. That is the right usage. But we dispelled the cough from the patient's throat. This is something that we eliminating. Now let us move on to the next section, which is the words in focus. तो ये है हमारा नेक्स्ट सेक्शन इस क्लास में. सो द मेन एजेंडा ऑफ दिस सेक्शन इज वील टेक सर्टेन वर्ड्स एंड आप CUET देख लो, कोई भी बैंकिंग एग्जाम्स देख लो, सभी में ऐसे आते हैं कि सिलेक्ट द राइट ऑल्टरनेटिव वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन यूज्ड करेक्टली. सो वी विल ट्राई टू फोकस ऑन दैट. ठीक है. तो द वर्ड हियर इज, फर्स्ट वर्ड इज रिलेटिव. एक रिलेटिव वो होता है
जो कि हमारा फैमिली मेंबर होता है, चाचा, भतीजा, मामा, काका, दैट्स रिलेटिव. सेकंड इज व्हेन यू कंपेयर. नाउ कंपेयर इज, we can say that I am comparing myself with my brother's scorecard and I have scored higher relative to him. That is how comparison is used. Second is relation या proportion. My hard work या फिर my scores are relative to my hard work. That is one of the usage. हम इसको ऐसे समझेंगे कि ऐसे it is directly proportional to the amount of effort that I am putting in. And the last one is something that is compared to another. This is a best example or best way to remember it is the concept of velocity is a relative measurement. Why do we say it is a relative measurement? यह हम इससे पता चलता है कि based on the previous time frame कितना बढ़ा है या कितना कम हुआ है. When we are comparing one thing with a previous time frame or something that is with respect to a previous value that we have, तब हम लोग the word relative को use करते हैं. So the velocity is in itself a relative measurement and not an absolute measurement. Not an absolute measurement. ठीक है? Dilute का I think we discussed it. Next we will go to hoard. Now the word hoard, I think we have also discussed it in one of the previous classes. No worries, we'll also revisit it. तो hoard का क्या होता है? होर्ड का होता है, एक होता है गैदर करके रखना. When there was COVID, a lot of people were, I'm sorry, it was not visible. तो so hoard का होता है कि गैदर करके रखना. During the pandemic, a lot of people hoarded food and other sanitary materials in their home. That is hoard. Hoard can also refer to a hidden stockpile or hidden area. Okay, and lastly, hoard is also an illegal storage that is present. An illegal storage which is present, be it in our homes or be it in anybody's secret area. Okay, that is called hoard. Okay, now I think that we have reached the end of the video. So there were a couple of things that we discussed in the previous video. तो उसमें से एक था कि caprice. I think I missed out on that. I told you, right, कि caprice, I will be sharing a trick how you can remember this word. So caprice का मतलब क्या था? moody. ठीक है ना. caprice अगर हम उसको ऐसे लिखें कि कैप्रीस, ठीक है, कैप्रीस मतलब कैप को निकाले कपड़ा. तो क्या है? वी चेंज आवर क्लोथ्स एवरी डे. हम कपड़ा बदलते हैं. अगर हम कपड़ा बदलते हैं तो अगर किसी का मूड भी ऐसे ही बदलते रहता है कपड़े जैसे, तो उसको क्या बोलेंगे? कैप्रीस. व्हाट वी विल कॉल इट? कैप्रीस. किसी का कपड़ा किसी का मूड अगर बदलता है as quick as we change our clothes, then we can call that person as caprice, which is moody. Okay, I think this was the trick that I said I'll be discussing. And another one was an idiom. The idiom was, I'll write it here only. Next page में करते हैं. चलो, I asked you to look for the idiom that comes with the word advocate. तो ये idiom क्या होगा? Devil's advocate. तो डेविल्स एडवोकेट हम किसे बोलते हैं? अब मान लीजिए मीटिंग हो रहा है, ठीक है. मीटिंग में द बॉस हैज डिसाइडेड 3 or 4 pointers regarding a particular strategy and they want to go ahead with the strategy. Now कोई भी मीटिंग में आता है वो सारे स्ट्रैटेजीज को चैलेंज करता है. And the reason why they keep challenging each and every strategy is because they want to stress test it. Stress test. Stress test का मतलब क्या होता है? कि go ahead and check if that strategy is failing in any of the boundary conditions or not. अब इसमें जो इंसान यहाँ पे उस चीज को चैलेंज करता है इंटेंशनली, उसको बोला जाता है डेविल्स एडवोकेट. ठीक है. डेविल्स एडवोकेट इज अ पर्सन who is looking forward to find faults such that any
form of mishaps can be avoided. Any form of mishaps can be avoided. Mishap मतलब mishap is mishappenings. Mishap is also new word. Mishap मतलब mishappening accidents can be avoided. ठीक है? So I believe there are a lot of words that we read today, and I am very hopeful that you guys will also be enjoying it. So if you're liking this video, please make sure to like and subscribe to the channel, क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे काम करने के लिए. एंड आई रियली होप दैट यू ऑल्सो ट्यून इन फॉर द नेक्स्ट वीडियो जो हमने नेक्स्ट रखा है. थैंक यू.